students to standard 10th maths chapter 3 pair of linear equations in two variables. Well, these two sums we didn't do in the 10th session. Alright, as I said, we'll do it in 11th session. So this is actually 11th session. Let's see the statement. The numerator of a fraction is 4 less than denominator. That is condition 1. Comparison between the numerator and denominator of a fraction is given, correct? The numerator, if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then actually this is repeated now. Then the denominator is 8 times the numerator. This is condition number 2, very long one. We'll have to try to understand it well. Alright, find the fraction. Alright, fraction has two parts, children. Okay, यहाँ मैं लिख रहा हूँ fraction. Alright, और उसके parts, numerator and denominator. Alright, children. Well, numerator, I'll call it n, the tricky symbol. For denominator, n. So the fraction is going to be numerator upon denominator. This is the original fraction, correct? Okay. Let's say the general symbol for numerator x and that for denominator y. So this fraction becomes x upon y. So our original fraction is x upon y, where numerator is x and denominator is y. Alright. Condition 1. What does condition 1 tells us? The numerator of fraction, that means n, is 4 less. So it is less by 4. Then what? Then denominator, that is d. Convert inequality into equality, correct? Which is smaller, n. N is smaller, n is less by 4. So n plus 4, adding 4 to n gives d. Now what we have called n, x plus 4, and what is d, y. So this is your first equation, correct, children? Okay, I'll use pen to represent the second condition symbolically. If the numerator is decreased by 2, that means n minus 2, numerator is, n is the numerator. If numerator is decreased by 2, it becomes n minus 2. And the denominator is increased by 1. Denominator is d. If I increase that by 1, children, अब interesting. So नया numerator ये बन गया और नया denominator ये बन गया. Then the new denominator, what is the denominator? Then I'm using the word. Then denominator is 8 times the numerator is equal to 8 times the numerator. Are you getting me, children? Now tell me what is denominator? D plus 1. That is 8 times. What is numerator? N minus 2. Put those symbols. What is D? Yes, it is Y plus 1. And 8 times. What is N? That is X minus 2. This is your second equation, children. Be careful. I hope you have understood. I'll read again. If numerator is decreased by 2, so you have reduced numerator by 2 and denominator is increased by 1. So you have increased denominator by 1. Then the denominator, matlab ye, correct? I wrote denominator is 8 times the numerator. So 8 times the numerator. Now denominator is d plus 1 and numerator is n minus 2. So 8 times. So this is your second equation. Alright. Now how will you write? Suppose the numerator and the denominator of required fraction are respectively x and y. बस अब इतनी मेहनत की है पेंसिल वर्क, ये पूरा पेंसिल वर्क समझना और वो आपको लिखना है. सॉल्यूशन यहां से शुरू करना है. फर्स्ट पेंसिल वर्क एंड देन यू स्टार्ट योर सपोजिशन वर्क. Thus, by the data we
हैव, डेटा में पहली कंडीशन ये है x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। ओके, उसको डिजायरेबल फॉर्म में कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एंड कॉल इट इक्वेशन 1। एंड ये वाला y प्लस 1 is equal to 8 times x minus 2. Therefore, y plus 1 is equal to, distribute कर दो, 8x minus 16. Alright. Therefore, 1 plus 16 is equal to 8x minus y, i.e. 8x minus y is equal to 17. This is equation number 2. Is that clear, children? फिर ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू रखो तब आपको फ्रैक्शन मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? फाइन। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू द पेंसिल वर्क, दोनों इक्वेशन सिर्फ लाके देंगे, राइट? चलिए, लेट्स सी। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 1 is subtracted from both numerator and denominator. This is condition 1. If 1 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Alright, fraction ढूंढना है, उसके दो पार्ट्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर n कहता हूं, डिनोमिनेटर d, और न्यूमरेटर को x कह देंगे और डिनोमिनेटर को y कह देंगे। अपना फ्रैक्शन n अपॉन d है, मतलब x अपॉन y है। इफ यू वांट यू कैन डू डायरेक्टली नाउ। द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब इट बिकम्स इक्वल टू 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऑलराइट, न्यूमरेटर x है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर, डिनोमिनेटर y है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड इवन फ्रॉम देयर। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? ऑलराइट, if 1 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Array, the fraction becomes 5/6 if the original fraction x upon y, if 1 is added to numerator as well as denominator, then it becomes this. This is your second equation. या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, एंड देन यूज एनी मेथड टू सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? गुड। Moving ahead to number 28 actually. It will be 28. Okay? Not 29 but 28. This will be 29. And this will be 30. And this 31. Alright, let's see. The sum of numerator and the denominator of fraction is 4 more. Is 4 more. So greater than twice the numerator. That is the first condition. The sum of numerator and denominator of fraction is 4 more than twice the numerator. That is condition 1. Alright, what is condition 2? If the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3. They means numerator and denominator. They are in the ratio 2:3. Yes, determine the fraction. Alright, वो फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर d. ओके, ये ट्रिकी सिंबल, और फ्रैक्शन n अपॉन d होगा, लेकिन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू न्यूमरेटर को x कह देते हैं, सो हियर न्यूमरेटर बिकम्स x, और डिनोमिनेटर को y कह देते हैं, सो डिनोमिनेटर वुड बी y. So your fraction is n upon d, or you can say x upon y. Now very interesting. The sum. So sum of numerator and denominator. So numerator and denominator is 4 more. So it is more by 4. Then what? Then twice the numerator. 2 times numerator. Put the value. Numerator is x. Denominator is y. Yes, children. ये राइट साइड स्मॉल है, सो इक्वालिटी भी कन्वर्ट कर देते हैं। 2n, व्हाट इज n? x, so 2x, and this right hand side is smaller by 4, so plus 4. So this is your first equation, children. Be careful, that is your first equation. Okay, next equation. If numerator and denominator are
increased by 3. All right, n and d, they are numerator denominator, but both are increased by 3. Numerator is increased by 3, denominator is increased by 3. And now this new numerator and denominator, what is their relationship? Their ratio is 2:3. So n plus 3 is to d plus 3 is equal to 2:3. So आप लिखोगे n की जगह पे x plus 3 is to, so upon d की जगह पे y plus 3 is equal to 2/3. Children, this is your second equation. Is that clear, children? I hope so. All right. Now, well, फिर ये दोनों इक्वेशन को आप डिजायर्ड फॉर्म में लाओ, एलिमिनेशन मेथड करो, whatever you want, and get the value of x and y. And once you get x and y, x upon y. So whatever, say suppose you get 3 and 5. So 3/5 is the required fraction. जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से आप लिखना. Is that clear? चलिए, moving on to the next one. If the numerator of a fraction is multiplied by 2 and denominator is reduced by 5, the fraction becomes 6/5. ये थोड़ा आसान सा है. Now I am writing directly. See, the fraction becomes 6/5. कब? If the numerator and denominator, numerator of fraction is multiplied by 2. So you can multiply 2 like this, and denominator is reduced by 5. So -5. All right. अब इसको हम x कह देंगे, राइट? x लिखी दूं और इसको हम y कह देंगे. सो इक्वेशन क्या बना? 2x upon y minus 5 is equal to 6/5. This is equation 1. Clear, children? चलिए, next one. And if denominator is doubled and numerator is increased by 8, the fraction becomes 2/5. Now the fraction becomes 2/5. If denominator is double means 2 times, and numerator is increased by 8, numerator n plus 8. अरे चिल्ड्रन, इससे क्या मिला? n को हमने x कहने वाले हैं, so x plus 8, और d को हमने y कह के रखा है, 2y, that is equal to 2/5. This is your equation number 2. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो, then desired form लाओ और solve करो. Is that clear, children? I hope you will be able to do. I am doing now only 20% part of the work of the solution. 80% you have to complete. Okay? चलिए. Now, fraction उस टाइप के सम्स भी खत्म हुए. We are going to see miscellaneous. All right? All mixed sums now. Let's see. Next, it's number 30. Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. चलो जरा समझिए. सपोज हमने 25 क्वेश्चंस आंसर किए, उसमें से 20 राइट है और 5 रॉन्ग है. अब हर एक राइट आंसर्स के 3 मार्क. सो एक के 3 मार्क, सो 20 के 20 टाइम्स 3, सो 60 मार्क्स हो गए. लेकिन आपके 5 रॉन्ग भी हुए और हर एक रॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क गंवाना पड़ेगा. सो 1 क्वेश्चन रॉन्ग, 1 मार्क गॉन. सो 5 क्वेश्चंस, 5 times 1, so 5. You scored 60 for correct one, but you are going to lose 5 for incorrect one. So your final score is going to be 55. I hope you have understood that. Okay? तो ऐसा ही कुछ है यहां. चलिए. Now next condition. Had 4 marks been awarded for correct answer. Condition 1 में only 3 marks are awarded for correct answer, and 1 mark is lost for wrong answer. But in second condition, condition 2 में क्या कहा गया है? If 4 marks, had 4 marks been awarded for the correct answer and 2 marks have been deducted for incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Now this is also interesting, children. How many questions were there in the test? Children, जो भी हो 2 पार्ट्स में होना चाहिए.
तो जितने भी क्वेश्चन, सपोज कर 25 क्वेश्चन इस एग्जाम्पल पर मैंने बताया, तो 20 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट है कि नहीं? सो नंबर ऑफ करेक्ट x, नंबर ऑफ इनकरेक्ट y, ऐसे बोलेंगे. सो x प्लस y इज इक्वल टू 25. हुआ कि नहीं? सो इफ यू वांट टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, आप उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जो क्वेश्चन इनकरेक्टली आंसर्ड है और जो करेक्टली आंसर्ड है और जो इनकरेक्टली आंसर्ड है, और टोटल विल कम टू 25. ओके, चलिए. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग, इनकरेक्टली आंसर्ड and correctly answered, incorrectly answered and correctly answered हम ट्रिकी सिंबल C, incorrectly answered ट्रिकी सिंबल R. तो incorrectly answered and correctly answered question total will make total number of questions which you are supposed to find. All right, इसको हम कह देंगे x और इसको कह देंगे y. So आपको x और y की वैल्यू ढूंढनी है if you want to find the total number of questions in the test. Now very interesting children, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क मिलेंगे. तो 2 करेक्ट आंसर के लिए 2 टाइम्स 3, 5 करेक्ट आंसर के लिए 5 टाइम्स 3, 7 करेक्ट आंसर्स के लिए 7 टाइम्स 3. आपके करेक्ट आंसर्स कितने हैं? x. तो x करेक्ट आंसर्स के लिए x टाइम 3, सो दैट विल बी 3x मार्क्स. जैसे आपका 60 हुआ वैसे यहां 3x मार्क्स. उसमें से सब्ट्रैक्ट करो. एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क, 2 इनकरेक्ट के लिए 2 टाइम्स 1, 7 इनकरेक्ट के लिए 7 टाइम्स 1, और आपके y इनकरेक्ट है, y इनकरेक्ट के लिए y टाइम्स 1, सो 1y. This marks red colored 3x whatever is written is for correct answers, and this you are losing, so subtracting for incorrect, and then after subtracting the total marks scored, final marks scored is 40. So this is your first equation. चलिए सेकंड कंडीशन, had 4 marks been awarded, एक करेक्ट के लिए 4 मार्क्स, 2 करेक्ट के लिए 2 टाइम्स 4, 3 करेक्ट के लिए 3 टाइम्स 4, सो x करेक्ट के लिए x टाइम्स 4, दैट इज 4x, माइनस एक इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स, 2 इनकरेक्ट के लिए 2 टाइम्स 2, 3 इनकरेक्ट के लिए 3 टाइम्स 2, तो y इनकरेक्ट के लिए y टाइम्स 2, सो 2y marks will be deducted. And after deducting, the final score is 50. This is your second equation. बस इसको solve करो and get the value of x and y. Is that clear to you? Okay. Moving on to the next one. Meena went to a bank to withdraw 2,000 rupees. She wanted to withdraw 2,000 rupees. She asked cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Correct? Meena got 25 notes in all, total notes. All right, how many notes? Find how many notes of 50 rupees and notes of 100 rupees she received. Chaliye, suppose 50 rupees notes were x in number and 100 rupees notes were y in number. Children, मीना गॉट टोटली 25 नोट्स. तो पहला इक्वेशन ऐसे ही बन गया. I'll write number of 50 rupees note x और number of 100 rupees notes y और total notes 25. सो पहला इक्वेशन तो ऐसे ही बन गया. समझ में आई बात? अब चिल्ड्रन बहुत ही जरूरी, आपके पास एक नोट हो 50 रुपीज का, सो व्हाट इज द वैल्यू? 1 टाइम्स 50. 2 नोट्स हो 50 रुपीज का, सो 2 टाइम्स 50, सो वो यस यू कैन से 2 टाइम्स 50 या 100 रुपीज. 3 नोट्स हो तो 3 टाइम्स 50, सो 150. तो आपके पास कितनी नोट्स है 50 रुपीज की? x. तो x टाइम 50 मतलब 50x रुपीज. सो जो आपके पास 50 रुपीज की नोट्स है x, उसकी टोटल वैल्यू है 50x. उसी तरह चिल्ड्रन आपके पास एक नोट 100 रुपीज की है तो उसकी वैल्यू 1 टाइम्स 100, सो दैट इज 100. 2 नोट्स 100 रुपीज की है तो 2 टाइम्स 100, सो उसकी वैल्यू 200. आपके पास 100 रुपीज की नोट्स है कितनी मीना के पास? y. सो y टाइम्स 100 and that is 100y. So value of 100 rupees notes is 100y. आपके पास x नोट्स 50 रुपीज की है तो टोटल वैल्यू 50x. आपके पास 100 रुपीज की नोट्स y नंबर में है
सो वैल्यू ऑफ दैट इज 100y, और दोनों का टोटल करेंगे तो कैशियर ने आपको 2000 रुपीज दिया था. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. Okay, good. Proceeding further, children, it's exercise 3.5. We are going to see two questions, question number 1 and 2. All right, let's see what we have in the first one. Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solutions? You know, U, N, I. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Then there is unique solution. But if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2, then no solution. And finally, if all three are equal, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then you have infinite solution. So you just find out A1, B1, C1, A2, B2, C2 and check these three ratios. If you get all three not equal, unique solution. If you get first equal but third not equal, alright, then no solution. And if all three ratios if you find equal, then you have infinite solutions. Let's see the first one. Okay. Yeah, the equation should be in standard form. So both the equations are in standard form. So for the first one, okay, A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. I'm not putting this equality or inequality sign just now. What is A1? 1. What is A2? 3. What is B1? Minus 3. What is B2? Minus 9. What is C2? Minus 3. What is actually C1? And now C2 minus 2. This minus minus becomes plus, and some simplification is also possible. So what you got? 1 upon 3, 1 upon 3 and 3 upon 2. So these two very clearly are equal, but this is not equal. So second one holds. So here there is no solution for this pair of equations. Clear? Now second one. Let's see the second one. Alright. A1 is 2, A2 is 3, B1 is 1, B2 is 2. Children remember, ये plus 5 minus 5 ओके वो बाजू जाएगा. So C1 is minus 5. ये भी standard form में नहीं है. 8 वो बाजू minus 8. So this minus minus plus. So इसका reduced form 2 upon 3. ये already reduced है. तीनों reduced है और तीनों not equal है. So first form. So here you will have unique solution. Correct, children? Third one. All right. What is A1? 3. What is A2? 6. What is B1? Minus 5. What is B2? Minus 10. What is C1? वो बाजू जाके minus 20. What is C2? Plus 40 on other side. Minus 40. ये minus minus plus reduce हो रहा है. 5 1 जा 5 2 जा. Minus minus plus. 0 0 cancel. 2 1 जा 2 2 जा. 3 1 जा 3 2 जा. So you got half, half and half. तीनों इक्वल है. So that means there is infinite solution, or there are infinite solutions. So the third linear pair of equation will have infinite solutions. Let's see the fourth one now. A1 is 1, A2 is 3, B1 minus 3, B2 minus 3, C1 already left standard form here, so minus 7, और C2 minus 15. Minus minus plus minus, ये simplify भी होगा. So you got 1/3, you got 1 and 7 upon 15. ये भी not equal, ये भी not equal. So all three are not equal, so unique solution. Is that clear, children? Okay. Now there is twist in a question. For which values of A and B does the following pair of linear equations have infinite solutions? ये pair of equation, second one is quite complicated. Yes, they have infinite solution. तो calculation करो. Infinite solution कब आएगा? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. ये तीनों equal. Now what is A1? देख लो बराबर 2 upon. What is A2?
वेरी इंटरेस्टिंग, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स a माइनस बी, यहां इक्वल टू है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. व्हाट इज b1? दैट इज 3 अपॉन व्हाट इज b2? y का कोएफिशिएंट, दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट इज c1? चिल्ड्रन बी केयरफुल, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. 7 ऑन अदर साइड विल बिकम -7 और ये पूरा ब्रैकेट 3 टर्म वाला पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. सो माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2. ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस. चिल्ड्रन यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो यहां से आप ये लोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा. सो 2 टाइम्स, यस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, a प्लस b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस b. दैट गिव्स मी 2a प्लस 2b is equal to 3a minus 3b. 2a minus 3a gives me minus a. 2b plus 3b gives me plus 5b. That is equal to 0. This is first equation in terms of a and b. Alright. Now you are supposed to find one more equation because you have to find the values of a and b. Correct? So I have got only one equation. This equation will have infinite values of a and b which will satisfy the equation. So what we do, let's take this 2. Alright? Yeah, second and third ratio. I'm taking this 2. 2 times 3a cross multiplication. 3a plus b minus 2 is equal to 7 times a minus b. So this is going to give me another equation. Therefore 6a distribute karo 2 ko plus 2b minus 4 is equal to 7a minus 7b. 6a minus 7a, that is minus a. 2b plus 7b, that will be 9b. और minus 4 बाजू ले जाओ plus 4. This is second equation. मिल गया ना? Yes. अब दोनों इक्वेशन को लिखो. कोएफिशिएंट तो सेम है a का. a plus 5b is equal to 0. Sorry, minus a. और minus a plus 9b is equal to 4. Yes. Subtract करो, so sign will change. This becomes plus, this becomes minus and minus. So this cancels. Minus 4b is equal to minus 4. Therefore plus 4b is equal to 4. 4 ones are 4 ones are. Therefore b is equal to 1. Put value of b in any one of the equation. Alright. So इसमें रख देते हैं. So minus a plus 5 into 1 is equal to 0. Therefore minus a is equal to minus 5. Therefore a is equal to 5. So a is equal to 1, in fact 5, and b is equal to 1. These are the values of a and b. Alright children, so moving on to the next one, and that is number 2. Alright. Here 3x plus y is equal to 1. Bracket into x plus bracket into y equal to 2k plus 1. Find k if there is no solution. This linear pair of equation has no solution. अब बताएंगे कौन सी कंडीशन लगेगी? नो सॉल्यूशन मीन्स a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2. So we have a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2. Now we are supposed to find the value of a. Actually k. Correct? So you take equal to, आपको वैल्यू ढूंढनी है. So take equal to only. Now बताइए what is a1? Yes, coefficient of x which is 3. What is a2? Coefficient of x in the second equation, that is 2k minus 1 is equal to, बोलिए b1 that is 1 and what is b2 that is k minus 1. और ये तो not equal to आएगा. c1 ओ साइड जाएगा -1, c2 वो बाजू ब्रैकेट में 2k plus 1, ये पूरी ब्रैकेट वो बाजू जाएगी 2k plus 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. बट आई एम सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो आई टेक ओनली इक्वल टू ये फर्स्ट रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 3 टाइम्स k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 2k माइनस 1. सो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1. 3k माइनस 2k इसके और माइनस 1 प्लस 3. Therefore k is equal to 2. I hope you have understood. So for k equal to 2, this pair of equation has no solution. Is that clear, children? Proceeding further. Alright. Now we are going to see few objective questions of 1 mark each. Alright. Write the value of k. So you are supposed to find the value of k for which the system of these equations has no solution. Once again, no solution. And the equations are in standard form. What you have? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2
is not equal to C1 upon C2. No solution, right? No solution. So first equal and last not equal. Carefully put the values of A1. A1 x का कोएफिशिएंट 1, A2 x का कोएफिशिएंट 2 is equal to B1 y का कोएफिशिएंट which is 1, B2 y का कोएफिशिएंट which is k is not equal to C1 minus 4 और C2 minus 3. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Once again you are supposed to find the value of k. So आप सिर्फ इक्वल टू लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसको. So k is equal to 2. So for k equal to 2, this pair of equation has no solution. ये लेंगे तो not equal to आएगा. You are supposed to find the value of k. Value of k क्या है? So 2. Is that clear? Next. Write the value of k, again value of k, for which the system of equation, yes, this too has infinitely many solutions. So infinitely many solutions. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. यहां कोई भी दो ले सकते हैं. All right. चलिए, what is a1? Coefficient of x in the first equation which is 2 upon coefficient of x in the second equation is a2 which is 6 equal to है क्योंकि infinitely many solutions है. b1 coefficient of y which is minus 1. b2 coefficient of y which is k is equal to c1. ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. 5 उस साइड पे माइनस 5 होगा, वैसे ही 15 उस साइड पे माइनस 15 होगा. माइनस माइनस प्लस. आपको k की वैल्यू ढूंढनी है तो ये ले सकते हैं. बोलिए 2k is equal to minus 6. 2 1s are 2 3s are, so k is equal to minus 3. चिल्ड्रन, यदि आप ये लेते तो भी सेम आता. minus 15 into 1 that is equal to 5k. 5 1s are 5 3s are, i.e. k is equal to minus 3 क्योंकि दोनों में इक्वल है. अरे एक और चिल्ड्रन, यदि आप फर्स्ट और थर्ड लेते तो भी, लेकिन उसमें k ही नहीं है. फर्स्ट और थर्ड में k की वैल्यू ही नहीं है तो वो नहीं ले सकते. सो k is equal to minus 3. Clear children? Okay. Next one. Write the value of k for which the system of this equation has unique solution. So not equal. Now you have to be careful. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स नॉट इक्वल. और आपको वैल्यू ऑफ के ढूंढनी है. जो आएगी वो नॉट इक्वल आएगी, लेकिन जो इक्वल टू है वो वैल्यू आपको लिखनी है. सो बी वेरी केयरफुल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान में रखना. चलिए, व्हाट इज a1? कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1. व्हाट इज a2? कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2. नॉट इक्वल. b1 कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज k. b2 coefficient of y, that is minus 1, not equal to. This will be 0 upon 0. 0 upon 0 लेने की जरूरत ही नहीं है, आप यही ले लो. So k क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. So minus 1 is equal to 2k. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 1 minus 1 and equal to नहीं, not equal to. Therefore minus 1 upon 2 is not equal to k, i.e. k is not equal to minus 1 upon 2. Now you see children, what is the value of k? यहां तो नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 आया, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ k इज एनी रियल नंबर अदर देन माइनस 1 अपॉन 2. माइनस 1 अपॉन 2 नहीं होना चाहिए. उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो, वैल्यू ऑफ k चलेगी. फॉर दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. I hope you understood how you have to write the answer. Yeah, k not equal to minus 1 upon 2 लिख दिया तो भी ठीक है, लेकिन आपको तो वैल्यू ऑफ k लिखनी है. So value of k is any real number other than minus 1 upon 2. Is that clear? Good. Next, write the number of solutions of the following pair of equations. कितने solutions है वो देखना है. Yes children, first not equal और सेकंड भी नॉट इक्वल तो वन सॉल्यूशन. यूनिक मीन्स वन सॉल्यूशन. फर्स्ट इक्वल लेकिन नेक्स्ट नॉट इक्वल तो एक भी सॉल्यूशन नहीं, और तीनों इक्वल तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो वो चेक करेंगे. व्हाट इज a1 1, व्हाट इज a2 हाफ, सॉरी 2, व्हाट इज b1 2, व्हाट इज b2 4, व्हाट इज c1, वो तो माइनस 8 ही है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. 16 वो बाजू जाएगा. सो दैट इज माइनस 16. All right, माइनस माइनस कैंसल. ये रिड्यूस 1s are 2s are, ये भी रिड्यूस 1s are 2s are.
सो व्हाट यू गॉट 1/2, 1/2, 1/2. अरे तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल मीन्स infinite solutions. So this pair of equation will have infinite solutions. Clear? Okay. Moving on to the next one. Find the value of k if this system of equation is inconsistent. ये pair of equation is inconsistent. Children, यहां बराबर आपको समझना है. Solution, yes. Solution, no. No solution, then it is inconsistent. और solution है तो such pair of equation is called consistent. कब solution होता है? either यूनिक होता है या इनफाइनाइट होता है. सो यदि यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन है तो पेयर इज इनकंसिस्टेंट. सो कब इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. Once again you have to find the value of k. So सिर्फ इक्वल लेंगे. चलिए, what is a1? 3 upon what is a2? That is 2k minus 1 is equal to b1, that is 1, b2, that is k minus 1. चलिए सॉल्व करिए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 times k minus 3 डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया. 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. That implies 3k minus 2k is k, minus 1 plus 3 will be plus 2. So k is equal to 2. So for value of k equal to 2, this pair of equation is inconsistent. Chaliye, number 5. Write the set of values of a and b for which the following system of equation has infinitely many solutions. चलिए, infinitely many solutions कब होता है? जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. चलिए, a1 x का फर्स्ट इक्वेशन में x का, ऑल राइट, और a2 क्या है? x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, दैट इज 2a is equal to b1 coefficient of y in the first equation. What is b2? Coefficient of y in the second equation, which is a plus b. बस ये 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. a plus b is equal to 3a. So b is equal to 2a. So yes, you got first. Okay, 2a minus b equal to 0. This is first equation. All right, children. अब आपको तीसरा इक्वेशन भी लेना होगा. So I'll have to take what is c1 minus 7 और what is c2 minus 28. माइनस माइनस और वन जा पोजा. चलिए ये ले लो फर्स्ट और लास्ट. 1 upon a is equal to, उसमें या 1 upon a is equal to 1 upon 4. So क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. So a is equal to 4. a मिल गया. b की वैल्यू ढूंढने के लिए 1 में वैल्यू रखो. 2 times a minus b equal to 0. So 2 times 4 minus b, okay, equal to b. वो साइड, राइट साइड गया, equal to b. Therefore b is equal to 8. I hope that is clear to you, children. All right. The last one. If this pair of equation has represent coincident lines, then obtain the relationship between a and b. Children, coincident line matlab one line is overlapping with the other. That means there are infinite solutions. Or infinite solutions means, once again, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. करेक्ट? बोलिए, a1 क्या है? x का कोएफिशिएंट which is 2. यहां x का कोएफिशिएंट a2 which is a plus b. b2 क्या है? minus 3. और यहां b, that is actually b1. सेकंड इक्वेशन में b2. Children, with minus sign, minus of a plus b minus 3y is equal to, और c1 वो minus 7 होगा और c2 minus of 4a plus b. ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस. चिल्ड्रन, जो भी आसान सा है वो ले लो. ये 4 टाइम्स ये ले लो. ऑल राइट, दिस इज व्हाट 4a. करेक्ट? आप ये 2 के ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 2 times 4a plus b is equal to 7 times a plus b. So this gives me 8a plus 2b and that is equal to 7a plus b. Children, here you can take first two
सेकंड एंड थर्ड या लास्ट टू कोई भी ले सकते हैं. 8a minus 7a, 2b minus b plus b equal to 0. So children, this is the relationship between a and b. आपको relationship between a and b ढूंढनी थी. So that is the first one. Is that clear, children? I hope you have understood. Okay. So that's all in session 11. See you in the next session. Actually, children, 8th and 9th sessions we have skipped. So after 11th, we will see 8th and 9th session. Okay, children? So see you in the 8th session after 11th. Till then, goodbye.